Okay, start. Okay, so in today's session, we will be learning about the session hijacking part and credentials harvesting. Okay, now I hope you guys are done with what is session hijacking and like basic theoretical part of session hijacking. Now, simply let us just move to the just a second. Let me set up my VM. Okay, so in today's session, we'll be looking after the sorry BeeF browser exploitation framework. Let me just show you BWF framework, the browser exploitation framework. It is not a tool; it is an framework. Okay, so how you just hack into someone just without like sorry, just sending a I would say okay, a link and how to hook their browser and how to launch things and how to steal cookies and all. Okay, so we'll be working on this beef part and then we'll be looking after credential harvesting. Okay, it is ready. Okay, so to Uh, just exit this. Yeah, just to start the beef or to download the beef as it is already installed in your Kali. It is like already available there. But hmm, to install it, what you can do is you can simply sudo apt install beef hyphen access. Now you can hit beef hyphen accesses and you can just hit enter. Hmm. Okay, I guess it is installed. Now, to start this, you just have to hit beef.accesses with the sudo. Okay, now, as you are like using it for the first time, so there's one thing that you have to set a new password for the beef user. Okay, and the password must be different from beef, but the password should not be beef. So I'll just set uh, and other than beef, like okay, command. Sure, sure. Okay, to install the B, that is sudo apt install. Right, where's the tab? Sudo apt install B hyphen accesses to install the B, and this command is used to start the B browser, the browser exploitation framework project. Okay, now I have like automatically redirected to its UI panel. Hmm. Now, let me just show you one thing. Even you can just git clone this if you are facing like any kind of issues with the installation. So you can simply just use this repo. You can just hit beef and all on your beef GitHub, and then you can just install this. So everything is mentioned here. Okay, what is beef? Like beef is a short form of this, and it is a penetration testing tool that focuses on web browser, beef browser exploitation, right? So simply focuses on vulnerabilities of browsers and all. Okay, and here are some requirements. If you are installing it separately, then
it is required. Got it? Now, this is like kind of commands, and you can install it. And if you have installed it using this GitHub, then you have to use /beef to start your tool. I mean framework. Okay, so let me just try. Okay, username is beef and password which you like just set it up before. Okay, now this is a I would say dashboard of beef. Okay, now here like before be big sorry before being able to fully explore the framework, you have to hook a browser. To begin you can point a browser towards a basic demo page or an advanced page. So here are two links, a basic link and here's an advanced link. Okay, so what you can do is you can simply use both of the links to like any of them. You can just share any of them to your target. Okay, right now I'm working on local host, so I'll be just sharing it to my virtual machine and then I can just get the access of this. Okay, and if you want to hook any page for debugging resources and all, so you can even bookmark this and all. Now, after hooking the browser, okay, let me just hook the browser for you. Okay, what I'm gonna do is I'll just simply copy this link, copy link address, and I'll just open this browser and I'll just paste this link here. Okay, link has been pasted here. And I'll just hit enter. Hmm, just a second. Well, the UI. Sorry. Guys, just a second here. Pani. Okay, yeah. So I guess this link isn't working right now. Let me just check it again. Okay, let me just try to open it our own browser. Okay. Mm, it is working here. Okay. Now, so simply I just opened this link and a normal page started. That's it. A normal web page started. But when you check your BeeF interface, then you can see in hooked browser, you can see a connection, right? And when I click on this, you can even read the information. Okay. Now, let us just read it. Mm, okay, it is a Linux x86-64 and everything is mentioned here. It is an like laptop, their screen size and everything is mentioned here. Okay. Now, what I'm going to do is I'll simply click on commands. When I click on commands, then you have a lot of modules here. A lot. Okay. So when for example, if I click on browser, so there are a lot of tools here. Let us just try something. Uh, let us just try something. Hmm. Username will be beef, BEEF, and password आपको set करना है. You have to set that. हाँ फिर हाँ just use that password जो पहले set किया. Huh. Okay, so I have simply opened the social engineering module. Now what I'm going to do is I'll simply, for example, I'll just hit a fake notification bar. Okay, or even I can use it in, for example, if I want to use this link in, for example.
let us use this link. Okay, I'll just open this and I'll simply open the Firefox. Okay, to just separate the machines. I'll simply use Firefox and there you go. I'll just simply hit enter. Okay. This is a normal, I would say, a demo page of the BeeF. Okay. And we can also load up an advanced demo page. Okay. Now what I did, I simply opened a page. That's it. I clicked on a link and a page opened. That's it. Let us get back to our this, and there you can see a session has been created. Let me just close this one. Okay, let me open this and there you go. Now I'll simply click on commands and let us just click on social engineering. Let me just click on fake notification bar. And if I have something like a URL or something, so I can just paste it here. Or like for example, let me just find something good. Mm, 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 mm. Exploits. You can even use these exploits to uh, get all the cookies. Now, let me just, these are some modules, detect MS Word and all. Let me just show you something. WordPress current user. This is for the like, make it persistence. Alright, phone gap, social engineering, fake, like for example, fake flash update. Okay. So here's an URL, for example, if you have an image URL or something, or if you have an payload. So a payload will be flashed here. Okay. Mm, there are some basic network bar, file upload. For example, I need pop-up. Let me just try if there's something called pop-up. Create pop-up. No, this is for post systems. And every log is getting uh, written here, every log, like what is being done on the window and all. Okay, let me just open that. एक second. Commands, miscellaneous. Mm, 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 mm. Okay, let me just try this Clippy something. Okay. So what I'm gonna do is, if you have any like kind of a dropper or something, dropper is matlab kind of a virus. Okay. So if I hit execute and get back to my browser, you can see this. What it is saying is your browser appears to be out of date and would you like to upgrade it? When you just click hit yes, and then a virus is downloaded in your computer. Okay, thank you. I have not mentioned anything, so nothing has been downloaded here. But if I have a virus or like a rat, a malware, then I can drop it in the browser. Okay, and we have something like fake notification bar. Okay, this website want to run. Okay, if I hit execute and if I check here, there go. This is a fake notification bar. This website want to run dash. To continue the website, you must accept the security pop-up. Then we just share the pop-up and all. Okay, then we have a Google phishing. If we just hit enter, then you can see a Google Mail has been like we have been redirected, but a iframe was used. So you can see if I hit enter, like for example, anything यहाँ पे and if I hit sign in, not now. Now I've been redirected to a Google page. That's it, a Google login page. But when I check it here, then you can see जो user है, what they have mentioned, username, password, Bill Gates and all. Okay, so you can also use this one, or we can. There are a lot of modules. Okay,
So we'll just check. There are some. Yes, we can. Sorry, like what's your intention? What you wanna do? Huh? Okay, okay. How can you do it? So, first understand, okay, right now we are working on localhost. Okay, you can see it 127.0.0.1, right? So, right now, if anyone is available in your network, then you can just do it right now, abhi to. Okay, but if you're saying, okay, I want to work with, I'd say, okay, over the like network, like WAN पे आपको if you want to work on the WAN, like if someone is not inside your network, then you can try it, two things. Like there are many ways, but I'll just suggest you two. First one is if you can buy a VPS. Okay, there's a VPS called Linode. You can either use this one. It is around $5 a month, something ऐसा कुछ होता है. So you can even buy this. Else you can use ngrok. This is a free tunneling tool. So what you're gonna do is you just have to install this ngrok and just where's हाँ now देखो यहाँ पे if you see के web UI is like 1 2 dot 7 7 करके ऐसे तो you can simply just change this and you can use your own IP. For example, if you want to hook something, so you can use your own IP with this port and just run this in any browser, like any browser which is not in your network. Then you will simply get a connection. That's it. You can even use ngrok, else you can go with, I'd say ngrok use कर सकते हो. There are a lot of tunneling services. I just don't remember the name. It was P से कुछ था, P go free tunneling services. Open tunnel नहीं. ngrok you can use this one. और यहाँ देखते हैं रेडिट पे localtunnel.me onion pie. Okay, you can use this one. ngrok से आपको सेटअप करना पड़ेगा इसको कंप्लीटली. पहले सबसे पहले ngrok को सेटअप करोगे तो इससे क्या होगा, आपका जो लोकल आईपी है ना, मतलब जैसे मेरा जो लोकल है जैसे 127 डॉट कुछ दिखा रहा है, तो वैसा ngrok विल बी प्रोवाइडिंग यू अ लिंक. ओके, बस उस लिंक को आपको यूज करना है. दैट्स इट. यहाँ पे इफ यू सी वेयर दी इफ यू सी इट कि यहाँ पे यू सी समथिंग कि भाई ये हुकिंग का एक स्क्रिप्ट दिया हुआ, राइट? there's an script. So what you're going to do is you'll just have to simply mention the IP which you got from ngrok. यहाँ पे you just have to, हाँ हाँ, इसमें you just have to, एडिटेबल नहीं है. what you have to do is देखो देखो यहाँ पे देखो, ये देखो इसने कर रखा है ना नीचे. this is an example. नहीं ब्राउ ये कैसे होगा, देखो दिस इज एन स्क्रिप्ट, लाइक जावा स्क्रिप्ट का मॉड्यूल है, सो यू कांट डू दैट. But what you can do is you just have to do something like, for example, if I copy this and if I just go to chat GPT, if I just enter chat GPT, okay, and I ask him कि create me a web page which executes uh, Java script
program JavaScript code, and I'll just give it the code. Okay. Now, if I use this, okay, for example, यहाँ पे इसने they have given us a code. ठीक है. So you can use any of the codes available on the internet. You can write your own code. For example, if I copy this and let me just open VS Code. I guess this is an basic HTML or HTML test. Hmm. For example, if I copy this, okay. Now what I'm gonna do is, okay, I just have to change this IP, for example, and let me just save it and let me just open a folder. Oops. Yes, that's the author. Mm, test dot HTML. देखो अब now what happened was कि simply एक hello world was just I mean, hello world सिर्फ एक script loaded. मतलब this if someone open this website, for example, if you are working on NGRock or something and you share the link with someone, so you can see कि simply a website open, right? But in the background, this script was loaded. The script was loaded, and you can just specify the IP address here and just change the IP address or like belongings and just share it with your target. That's it. And when simply a target click on the URL, then you will get a connection. Now, one more thing I just wanted to show you. Okay, for example, you'll be receiving a link. Okay, and this no, like I mean, you can just change this to remote six script execution. You can just change it to. You can just change the title to uh, hello world, hello world, WRLD, hello world, and I'll just save it and I'll be back to the. Okay, so this looks like a simple page. If someone did a control U or if they check the source code, then they can just look okay, what is actually happening here. Okay, now you'll get a simple link. For example, if you don't want to do all of this and you just want to share a link. Now, if I click this, there's the panel. If I click this, okay, so you can check if this link looks bit shady. Yeah, if you are working on something like if you're working on a VPS like virtual private system or something like that, RDP या उस पे if you are working, then link will be different and it would definitely look something like shady link. So what you have to do is you just have to simply visit the short URL. Okay, so these are some websites. They just shorten your URLs. For example, if I paste this URL to them and click on shorten, uh, रुको, this URL is actually not correct. And when you will be using a VPS, then you'll get a proper URL, then you can use it. For example, beef.com. Hmm. अब now you can see कि उस URL का they have converted, they have shortened that to this one, and this looks bit like less shady than that. And you can just copy this and send it to your target, and the same website will be loaded, and you're like you can do the same thing, right? You can do the same thing. So you can also use that totally depends on you okay, what method or what techniques you are using. Now let us just explore that one. Firefox commands and browser. Or there were some more modules, I guess.
Chrome extension. There's a command called get all cookies. So you can just execute that and you can just wait for the where's the browser? Look, I have to open that again, I guess. You can just drop something or you can steal something, whatever you feel like. वायस डाल के आपके पास मेटास्प्लॉइट पे कनेक्शन आ सकता है. Metasploit पे कनेक्शन आने के बाद you can do whatever you feel like. For example, there is a module called Metasploit, and this module will redirect user to auto-on port on Metasploit listener, and you can also get a connection on Metasploit. And Metasploit पे if you get a connection, तो I guess you guys know okay, what is Metasploit, and we have already done that. So there are a lot of modules, there are a lot of exploitation techniques. So you can get into their PC and you can like get a shell of their PC and you can simply get the connection and do whatever you feel like with that. हाँ, सब कुछ. And देखो iframe sniffer. देखो let me try this. There was something like iframe करके. Hmm, wait, wait. You can even detect Tor and all ping. You can even do a ping sweep. You just have to change the IP addresses and you can do a ping sweep, how many hosts are available and all. And there are some persistent techniques, so you can just make it persistent. So if someone closes this tab, for example, if someone closes this, then also you can just get this shell or like get this connection here. You can also hook the browsers. Mm, phone gap. Alert. Ha. देखो, there's something for geolocation. If you want to find the victim का geolocation, so you can also execute this. I guess I've chosen the wrong one. ये choose कर commands, or I can delete this. Wait, let me delete everything. Let me just log it out and we local date 15th of June, Sunday. Let me try to run something. Let us check if it is the same. Mm, yeah, okay. That is working. Now, let me just show you something crazy. Huh. Phone gap, if you click on the phone gap and if you want to alert user, for example, title ke you just got hacked and execute. You just visit here, I guess, अरे, well, let me try. Copy link. Where's my Firefox?
Let me just click on commands and okay, we can also list some files and all. If you want some directories or something, you can also list that. If you want to list some plugins here, you can do that and get geolocated this, sorry, geolocate your victim. And you can also geolocate them. Like for example, you can just get their location too. And I guess this phone gap API isn't working right now. So that's why we are not getting the results. But you can just find the results of the देखो, that just wants to allow your location. And normally जो browsers होते हैं, everything is allowed there. Like normally जो user है. Now let us check here if we got something or not. Mhm. Execute. Okay, there's an issue with this module, I guess. Else you will see the complete location of the user. If you will be using that over the internet, like from NG-Rock or something over the internet, if you are doing something, then it would be easy for you. And we have something like this keychain command and prompt user. You can even prompt the user. Sorry, इस कौन सा वाला? हम्म वहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, राइट? हाँ हाँ हाँ, ये आई गेस से मॉड्यूल के अंदर कुछ दिक्कत हो गया है। अब अपडेट करना पड़ेगा इसको। कमांड वन देखो यहाँ पे इफ यू सी के यू गॉट दी this longitude and latitude of that person, and you can even get this location वगैरह and all. And you know, I hope you know, guys know के how to simply access that longitude and latitude. Hmm. Let us just try this one for a while, if this works or not. Mhm. I guess there's some protection or something like that. Uh, but if you guys have old browsers, for example, I would say कि like if a person is using Windows 7 or a vulnerable browser, then it would be like working great. But in maybe हो जाता है, this might also work. I'll just have to check. Uh, Let us check this. HID devices, insecure content. What is the panel? Allowed users. Mhm. यहाँ पे इफ यू सी कि कमांड का रिजल्ट इज मेंशन्ड हियर, तो एक रिजल्ट आता है यहाँ पे आई गेस दिस एन इशू विद द मॉड्यूल बट इट वाज वर्किंग। मैंने ट्राई किया था पहले, इट वाज वर्किंग फाइन। जियो लोकेशन वाला चल रहा है, ये कमांड खोली थी ना ये। लोकेशन ब्राउजर के अंदर अलाउड है तो एंड
हाँ, सर्विसेज ऑन है तो लाइक नॉर्मली यूजर अरे यार, नॉर्मली यूजर होता है वो उसको अलाउ कर देता है। एंड ये देखो फेक लास्ट पास, तो अगर इसको ट्राई करते हैं एग्जीक्यूट करवाने की, देखो ये लास्ट पास, दिस वाज इन सर्विस, लाइक फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, लाइक दिस जस्ट सेव्स योर पासवर्ड, फॉर एग्जांपल दिस वाज इन पॉपअप, एंड व्हाट आई एम गोना डू इज आई विल सिंपली हिट here and I'll simply click on login. So if I check if something has been executed, so every keystroke has been this is called key logging. Key logging matlab every key, every single key was captured here. ASDLK, then next to that, next to, and in the end you can see the final ID and final password. This is a fake notification bar. We have tested that, and even you can just use your own. हाँ, की स्ट्रोक्स जितने भी होते हैं वो अपन प्रेस करते हैं तो सब चीजें वहां पे होती है, मतलब आई मीन वहां की जाती है। हाँ। User interface abuse, and there are a lot of modules, and even we can get the shell or detect virus and all, hook default browsers, make telephone call, IPC. There were some funny pranks too, यार, कहाँ गए? So that like you can do with your friends and all. There were some pranks. Mm, Flash browser, replace videos, spoof address bar. You can even spoof the address bar too. Tab napping, Firefox extension. You can even get a reversal if you just mention the IP and open the listener, then you can also get a reversal. Phone gap. This is something new. Phone gap, check connection, detect phone gap, check whether the API is present or not. Keychain, persistent. Okay, phone gap. I guess there's a thing called a tool or something. Phone gap. Hmm. Yes. Okay. I'll just show you that in the अपना this क्या बोलता है सोशल इंजीनियरिंग, अभी जो नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, आई विल जस्ट शो यू दैट। या switches, accesses, convert text to MP3 and play it on a hooked browser. Oh, this one doesn't have any speaker to be installed. Okay. ये क्या करता है, टेक्स्ट को इफ यू राइट एनी टेक्स्ट देन उसको MP3 में दे जस्ट कन्वर्ट इट एंड प्ले इन द हुक्ड ब्राउजर, वहाँ पे यहाँ पे प्ले कर देता है। तो इसके लिए दे आर, कहीं कहीं होगा यार ऑप्शन, एंड दो चीजें यहाँ पे शुड बी इंस्टॉल्ड, लेम एंड स्पीकर। रुको, चेक कहाँ देखना पड़ेगा। टॉप रिकॉर्डिंग ऑडियो, ये तो इसका है, अपलोड फाइल्स फ्रॉम अ डिवाइस टू अ सर्वर ऑफ योर चॉइस, नहीं। This module will attempt to execute LCAM test will be content and position attachment header dash 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 dash.
Okay, this was also an like pretty theft करके एक module था. So like a pop-up was generated here. Yeah, आना तो यही चाहिए. I guess there's something missing यहाँ पे text to voice में. Okay, I guess we have to install both of them, lame and e-speak, then we can do them. Simple hijacker, for example, Amazon, target domains beef, spoofing address bar, tag mapping. There are some modules missing in this, I guess. Update करना पड़ेगा या कुछ है. Okay, let me just check. Return image, get all the cookies, grab Google contacts, inject beef, inject screenshots. ये ट्राई करें स्क्रीनशॉट. Mm, edit user information. Some modules are working and some are not. I guess I have to update this or something. Or even I think इसका last release कब का है? 0.5.40 November 2021. Okay. We can even try this one. Like, for example, let me just log this out. But इसके लिए I just have to install all the pre. नहीं 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 क्लोज नहीं किया मैंने तो ये क्लोन किया था लाइक वो जो गिटहब पे एक रेपोजिटरी है ना गिटहब पे यू कैन सी. हाँ उसके लिए. या लेस बीफ लेस यहाँ पे रिक्वायरमेंट की फाइल है install.txt. ओके रूबी जेम्स अपन को इंस्टॉल करना पड़ेगा तो okay there are some prerequisites so we just have to complete them then उसके बाद we can use this tool. और क्या है ब्राइट बॉक्स रूबी एनजी. और इवन यू कैन इंस्टॉल दी दिस environment too अगर पूरे पे अपन रूबी नहीं इंस्टॉल करना चाहते. अपडेट भी. हम्म, हम्म.
Okay, you can just try it on your own, and I guess update करने से it would work. And even आप जब local host try करोगे, if you just try that, I would say not local host, I mean over the WAN try करो through ngrok, or if you buy a VPS or something, then it might also work via ngrok or something. Like I guess there are some modules which are not working right now, but they used to work. I've tried all of them. They used to work very well and like properly अच्छे से काम करते थे, but I don't know what is the issue. I guess there's some issue with the modules and I guess updated browser and kind of security thing. So you can just go to your virtual like VMware or something and install a Windows 7, and then you can try that for the like vulnerable machines and all. So that might be possible. And let us move further with the this अपना session का वो beef and credential harvesting. हाँ, credential harvesting के अंदर we have a thing called, रुको, अरे exit, exit, exit. Hmm. Now let us quickly move to the credential harvesting. Yeah, there's a thing called SE2 kit, social engineering toolkit. So you can simply install SET. You can just call it SET set or social engineering toolkit. Let me check if it is installed or not. She's to okay, it is installed. Okay, it is pre-installed and select from the menu. Social engineering attacks, penetration testing. Okay, let me just tell you what is credential harvesting first. Obsidian. I have some short notes. Let me just show you. Yeah, PHP seeding. Yeah. So simply, what is credential harvesting? So it is just a fancy term for stealing username password. Often though, like often through the fake login pages, like phishing जो होती है, उससे you can just do that. So what is credential harvesting? Stealing usernames and password. That's it. To harvest the credentials, to steal the credentials. That's it. That is credential harvesting. Now, we'll be using with set social engineering toolkit SET, and we'll be using more like session hijacking accesses. Hmm, where's that? Yeah, social engineering toolkit is pre-installed, and now third-party module. Let me first try to update this. Okay, it is already updated, I guess. Let me update the social engineering toolkit. Update. Then we have six. Hmm. Now let us just click on module one. Then we have some attacks called spear phishing attack vectors, website attack vectors, inf infectious media generator, create a payload and a listener, mass mailer, Arduino based, and a lot of attacks. Even PowerShell attack vectors. Let us try the spear phishing. Up now you can check what is spear phishing. The spear phishing module allows you to specially craft an email message and send them to a large number of people with attached file format, malicious payloads. If you want to spoof your email address, be sure that send mail is in dash dash करके, so you can use that and spoof your email address too.
Now, let me just tell you, okay, let us just use the spear phishing. Second, let me start it again. Clear. How to start it? Simply hit sudo, hit se tool kit. Now, there you go. And you can even use this one, or not this one, this one. You can use this to install the toolkit and you can run the program. You can run the command, or I would say, जो भी है, tool. अब let us do one thing. Let us create a phishing page using this SCT, like social engineering toolkit, and then we'll try to harvest the credentials. And like I'll just teach you how to create a, I would say, how to create a phishing page and all. Okay. Now, to create a phishing page, we have a lot of tools. For example, if you guys have ever heard about Z Cipher or Z Fisher, anyone, this tool. Okay. No. हाँ, ये kind of phishing page है. Phishing, we know के what is phishing, then let me just tell you. Do try नहीं चाहिए हमको, हमको social चाहिए आता. Active, authorize, authorize, authorize. Okay. Let this machine start my recording. Okay, I've got my Cloud Shell and let me just set. Okay, that feature is already installed here. So, let me just add this if it is working or not. Okay, now I want to make a page of Instagram. So I'll just set two and I want a blue badge verify login page. So I'll just set four and I'll just set two on the custom port. No. So this is बिल्कुल basic जो phishing होती है will be learning that कि what is like basic phishing. Okay. Now let me do one thing. Right. Okay, there was an issue. Let me just retry to Instagram for blue badge. No. No. Okay. We have got the URLs and let me just open this URL. Okay, now there was an issue, but यहाँ पे you can see Instagram का image just shows up. Now let me just share this link with you. You can even like you can also open this and you can just do the things you want. Like just try to fill the details. But the normal user है, they just don't read what is being mentioned here or like सब चीजें है ना, they just don't read. They just do कि हाँ okay free में blue tick मिल रहा है. They just go with that. Like Cloudflare. लोग वो दैट इज एन डिफरेंट टूल. कुछ भी यूज कर सकते हो. लोकल एक्सपोज उसको आपको सेट करना पड़ेगा बस. यू हैव जस्ट हैव टू सेट दैट अप.
नहीं, लोकल होस्ट को सेट नहीं करना पड़ेगा। लोकल होस्ट मतलब होता है कि अपने लोकल एरिया में चलाने के लिए, 127 डॉट पे चलाने के लिए, लोकल आईपी, अपने नेटवर्क में कोई बैठा था। ये लिंक शेयर कर दोगे? मैंने किया ना आप लोगों को, देखो। कैसे? हाँ, आप ओपन करके देखो ना लिंक को। क्या इशू आ रहा है? ओके, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रीजनरेट दैट। कोई हो सकता है कोई इशू आ गया हो। देखो, लेट मी जस्ट ट्राई सिंपल लॉगिंग पेज इंस्टाग्राम का, टू ट्रेडिशनल लॉगिंग पेज। नो। नो। अब दिस इज इंस्टाग्राम का ट्रेडिशनल लॉगिन पेज। देखो, I've got someone's IP addresses like 103, 168, 165.81. This may be a person who clicked on the link. Hmm. ब- कैसे? कुछ नहीं, यू कैन जस्ट ट्रैक इट आउट के हु इज दैट पर्सन, और ऑल आईपी से जो ट्रैकिंग होती है जिस लेवल की, आईएसपी को आप ट्रैक कर सकते हो उसको। नहीं, आईपी तो कैप्चर आ गया मेरे पास, आ गया ये auth.ip मेरे पास फाइल है, उसके अंदर आ गया। अब अब यहाँ पे आप whenever you just put anything on the page and everything will be uh, showed here. It will be saved in my like passwords and IP and all file, text file. So it is just like mind game how you just trick your victim to put the ID password and all. You can even try with your friends that कि भाई okay, this is a reel and all करके, तो what they do is simply, who are unaware, so what they will do is कि they'll just simply put the ID passwords. Okay, put the ID password in the link and you can just capture them and you can try to log it in. हम्म। ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है। Okay, so this is how a normal basic phishing works. ठीक है? You can even use Z Cipher and all. There are a lot of tools, and for like Isha, you were saying ना, for camera thing, तो camera के लिए Camfish करके tool आता है, Camfish GitHub. Look, there are a lot of tools. You can use any of them, like Camfish. This is a grab cam shots from target's phone front camera or PC का webcam by just sending a link. So you can use any of the tools. For example, CCTVs. हाँ, समझा नहीं। हाँ, हाँ, प्रॉपर वायरिंग वाला कौन सा आता है? हम्म।
हाँ प्रॉपर वायरिंग लगती थी, हाँ हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, देखो उसमें आता है कि एनवीआर, डीवीआर, एनवीआर आते हैं। मतलब बड़ा सा डब्बा देखा होगा आपने लगा हुआ, सफेद कलर का, काला कलर का। हाँ, तो एनवीआर आते हैं, डीवीआर आते हैं, उनमें क्या होता है, लोकली सेव होता है। मतलब एवरीथिंग इज लोकली स्टोर्ड देयर, एवरी रिकॉर्डिंग एंड ऑल। तो वो वहाँ पे सेव की जाती है। एंड वहीं पे इफ यू जस्ट पुट लाइक इथरनेट केबल, और इफ यू जस्ट पुट अ डोंगल और समथिंग, तो उससे क्या होगा, you can just watch all the recordings and all the, I would say, के live streamings on your device on the internet. तो अब you were talking about के कैम लाइव फीड के लिए you can do one thing. सबसे पहले you can just get into their networks, ठीक है। नेटवर्क में घुसने के बाद में अब लाइक वाईफाई में उनके घुस गए, अब आप नॉर्मली एक एनमैप स्कैन मारते हो तो आप वहाँ देखोगे ओके डैश डैश पोर्ट इज ओपन फॉर हाई, वो हिक विजन एंड ऑल होता है ना, कैमराज अलग अलग आते हैं, हिक विजन का आता है, कोई दूसरा आता है, तो वो आप खोलोगे, ठीक है। तो व्हाट यू गोना डू इज यू जस्ट सिंपली hit the IP, you'll just got a IP and a port number, तो you'll just have to open that। ओपन करके यू कैन डू वन थिंग कि यू कैन सिंपली चेक के भाई, जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मतलब 99.99% जो आईडी पासवर्ड्स आर ऑलवेज डिफॉल्ट। सो यू कैन डू वन थिंग, हाँ एडमिन एडमिन, नॉट एडमिन एडमिन बट डिफॉल्ट जो कंपनी देती है, ऑल दी आईडी पासवर्ड्स आर डिफॉल्ट। सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन सिंपली गूगल दैट के ओके हिकविजन कैमरा डैश डैश एंड व्हाट आर दी आईडी पासवर्ड एंड ऑल ऑफ डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड्स। So you will just get a list of them. You can just try and hit them, and you'll just get the live feed access of that. And with that, if you just like after getting the access, then जब डैशबोर्ड आप खोलोगे तो डैशबोर्ड के अंदर there is a thing called SN number, S/N, there is a number, though you just have to get that number। अब जैसे ही you have got that number, तो you can just do one thing, you can simply I'd say हाँ, जैसे आपको नंबर मिला, आप है ना उसको फ़ोन पे चला सकते हो। मतलब फ़ोन में देयर आर लॉट ऑफ ऐप्स, डीबीएमएस एंड ऑल, बहुत सारी ऐप्स आती है टू शो द कैमरा की लाइव फीड्स। तो यू कैन जस्ट कॉपी दैट नंबर एंड यू हैव द आईडी पासवर्ड एंड बूम, यू कैन यूज दोज कैमरास थ्रू योर फ़ोन टू। ओके एंड हाँ, किसमें हो? हाँ, बिना नेटवर्क में उसे कैसे आएगा? आप बताओ। हम्म, वो आपके डिवाइसेस बताता है ना, वो आपके डिवाइसेस बताता है ना। आपके आप nmap का स्कैन अपने नेटवर्क पे मारोगे, nmap इज अ नेटवर्क मैपिंग टूल, राइट। तो नेटवर्क मैपिंग टूल है, तो अब इसका मतलब क्या होता है, आपके नेटवर्क को मैप करना। आप जिस नेटवर्क में हो, उसको मैप करेगा। अगर अभी मैं nmap स्कैन मारता हूँ तो ये जो वाईफाई है, इससे जितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे को वो दिखेंगे ना। मेरा पड़ोसी तो दूसरे वाईफाई पे बैठा है, मेरे को वो कैसे दिखेगा? नेटवर्क में घुसने के लिए यू कैन जस्ट सिंपली कनेक्ट टू देयर वाईफाई एंड ऑल। हाँ हाँ हाँ, सारे कैमराज विल बी विजिबल देयर। हाँ हाँ हाँ, यू कैन क्रैक इट एंड जस्ट उसमें नेटवर्क में घुसोगे। हाँ, यस 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 यस। अब देखो यहाँ पे वी हैव ईशा, देयर, हाँ
हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, यस बिल्कुल बिल्कुल, आईपी फेच कर सकते हो, उनसे आईडी पासवर्ड ले सकते हो, एवरीथिंग कैन बी डन। Now, there's also a tool called like Camfish करके. तो you just have to do one thing. Just select these. This was a tunnel. ठीक है? Tunnel. There are some tunnel servers. What they do is they'll just simply take your local connection to over the like internet or WAN पे. LAN to WAN. They help your IPs to get from LAN to WAN. It is also called port forwarding to forward the ports. Now, if I normally choose this Cloudflare because NG Rocco I have to set that up. So I don't want to set everything up and all. Okay. So now what I'm gonna do is देखो, simply I chose this one too. Then it showed me a template. So there are some templates called festival wishing, live YouTube TV, online meeting. So I chose YouTube TV and it is now asking me for a watch ID like YouTube URL. For example, if I give them the close and let us wait and check whether this works or not. And sometime you can check YouTube का link कभी कभी ऐसा भी आता है youtube.be. तो your friends would think के scammer है. ठीक है. So okay, I have got the direct link now. So what I'm gonna do is I'll just simply share it with you, Isha. Uh, you just check on your own what is going here. Okay. Now I've shared the link with you. कर लो कर लो कर लो कोई दिक्कत. हाँ अब लोकेशन. हाँ अलाउ कर दो. अभी नॉर्मल जो यूजर है दे लाइक दे आर नॉट अवेयर के व्हाट इज गोइंग आउट एंड ऑल. तो हाँ फिर ये कैमरे की परमिशन मांगता है. देन इफ यू जस्ट हिट द कैमरा, कैमरा पे आप हाथ रख सकते हो. कैमरा पे हाथ रख के आप अलाउ कर दो एंड देन कैमरा की फाइल कैप्चर होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. अब ये हर बार स्क्रीनशॉट लेगा. देखो फॉर एग्जांपल ये आई गेस ये ईशा का है तो वी हैव गॉट ईशा का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ईशा का लोकेशन. एंड ये चिराग का कहाँ है? चिराग 103. और ये चिराग का है, ये चिराग का लोकेशन, ये ईशा का लोकेशन. एंड अब देखो यहाँ पे ये चिराग की फोटोज जो है कैप्चर वो होती जा रही है कैप्चरिंग फाइल. अब जब मैं रोकूंगा. हाँ अलाउ नहीं किया तो किसी का तो रिसीव हो रहा है. ईशा का हो रहा हो. तो अब हर देख सकते हैं ना, अभी हर सेकंड एक स्क्रीनशॉट ले रहा है. ठीक है, हर सेकंड एक स्क्रीनशॉट आ रहा है. तो स्क्रीनशॉट आई मीन फाइल कैप्चर हो रही है. तो व्हाट यू वांट टू डू इज अब देखो यू कैन चेक ऑल ऑफ द फोटोज यहाँ पे. इफ आई जस्ट ओपन them, like for example if I open this image with this black image or कुछ. Let me just hmm okay. नॉर्मली गिटहब पे जाओ, गिट क्लोन करो, कैमफिश इंस्टॉल हो गया. इवन यू कैन डू दिस इन योर मोबाइल फोन टू. देखो यहाँ पे जितने भी ये ब्लैक फोटोज आएंगे आपने वो बंद कर रखा होगा उसको. तो अभी हाँ 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 हाँ. अभी अभी मैंने रोक दिया, मैं कैप्चर करवा ही नहीं रहा. आई हैव जस्ट स्टॉप दैट. मतलब
I'll just share the link with you now. Don't worry. Check the description, like chat box. You can okay, done. Now let us just move to the okay, clear है? मतलब हाँ हाँ अपने पास जो फाइल्स आ रही थी कैम फाइल्स दे विल बी स्टॉप्ड। नहीं 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 टेक्स्ट ओके ओ ऐसे पूछ रहे हो वो क्रिएटर अलग अलग है और कुछ नहीं। हाँ सब सब चीजें सेम है कुछ टूल्स अच्छे से काम करते हैं कुछ नहीं करते हैं वो टोटली डिपेंड करता है कि भाई कैसे क्या। वीडियो रिकॉर्डिंग का तो नहीं है इसमें सिर्फ फ्रंट कैमरा आपको कैप्चर करता है एंड जीपीएस लोकेशन कैम शॉट्स। वीडियो का भी आपको मिल जाएगा। टूल्स बहुत सारे हैं यू कैन जस्ट हंट देम एंड फाइंड ऑन योर ओन। ठीक है। नाउ लेट अस क्विकली मूव टू दी लेट मी जस्ट लाइव कैमरा को वो करना इज बट मुश्किल जब तक आप पूरा सिस्टम को हैक नहीं करते ना तब तक। हाँ तब तक इट इज बट मुश्किल। आप यू कैन हैक दैट सिस्टम ना देन यू कैन जस्ट डू अ लाइव स्ट्रीमिंग और व्हाटएवर यू फील लाइक या व्हाटएवर यू। अभी बता ही रहा हूँ जस्ट अभी की क्लास में बता ही रहा हूँ। बिल्कुल। अब देखो लेट अस जस्ट क्विकली लर्न दिस टूल द टर्मिनल हाँ नाउ एक सेकेंड ये वीएम को मैं बंद कर देता हूँ and you can create your own phishing pages too. Like if you want your own phishing page, you can just clone that page, and you can even ask ChatGPT to create a phishing page for you. Then you can host that phishing page on your own, and boom, you can do whatever you feel like. You can just steal their credentials. You can harvest their credentials. Now, let us quickly. Let us open the SC toolkit. Where is it? Sudo SC toolkit, Kali. Okay, now I'll just hit the social engineering attacks one. अब if I want like for example अपन vector attacks choose करते हैं तो let us choose this one website vector attacks. हाँ अब you can read everything here के what is the like actual work and all. ठीक है. Now I'll just select credential harvester attack methods. Three. Now I have web के template site cloner custom import ठीक है. If I have my own page so I can import that. Then if I want to clone a site then I can do that too, and if I want their templates then I can use them too ठीक है. Now if I want के if I do a site cloner ठीक है. If I do site cloner and it is asking me for IP address for the post backend harvesting dash 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 dash. And for example, the way this works is by cloning a site and looking for form fields to rewrite if the post field are not usual method or for posting forms. This could fail. If it does, you can always save the HTML, rewrite the forms to be standard forms and use the import feature additionally. And ये कुछ shit लिखी हुई है यहाँ पे. So what you have to do is you can simply mention an IP and they'll just try to clone that. Okay, one thing. Second is you can use a tool called HT track. HT track. So what does this
like what is the actual work of this tool is this will just clone every single thing of a website, and you can just you'll just get a file like index.html, and you can just import it in this SEO tools and you can use that. Okay. Now I'll be not cloning anything. I'll just simply visit the uh, three website के templates. The way so cloning website, web track. रुको, let me just mention something. For example, एक हाँ एक ईशा वो asking एक वेबसाइट के बारे में, तो इट वाज डेमो डॉट जीरो। रुको, आई हैव एन लाइक अ वेबसाइट which is डेमो डॉट क्या था यार, डेमो डॉट टूल किट। एक सेकंड गाइस, लेट मी जस्ट रिकॉल दैट। हम्म अब लेट अस जस्ट क्विकली, ये क्या लिखा है, आईपी एड्रेस फॉर द पोस्ट बैक इन हार्वेस्टर। Is that my IP? F config. This is for the post request, so I guess अपना ही IP रहेगा 1.10. Okay, 1.10. So I'll just simply copy this and hit enter. Now, there are some templates, default templates called Java required, Google, and Twitter. So I'll just choose, for example, I'll choose Google and I'll hit enter. Sorry? जी 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 मतलब the best way to use this pictures all the post requests on the website. Mm-hmm. देख ये जस्ट अ सेकंड देखो, जस्ट यहाँ से काम करेगा मेरे भाई ये। यहाँ पे अब I'll for example I'll just hit कि this is completely a phishing page, ठीक है। अभी देखो you can see कि यार ये phishing पे this is the IP we have mentioned ना, यहाँ पे IP address for the post back in the harvester, जितना भी जवाब आएगा वो। हाँ, यहाँ पे अपना आईपी डाल सकते हो, वरना इफ यू हैव अ डिफरेंट आईपी लाइक आपका उसका है क्या बोलते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग आपने कर रखी है, एनजी रॉक वगैरह यूज कर रखा है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, अब देखो यहाँ पे, हाँ इट इज अ ओल्ड गूगल पेज राइट, ओल्ड है, कोई भी पता कर सकता है कि इट माइट बी अ फिशिंग पेज, तो यू कैन क्रिएट योर ओन गूगल फिशिंग पेज एंड जस्ट डू द सेम थिंग। फॉर एग्जांपल आई जस्ट हिट and at gmail.com, and
and I'll just hit sign in. So I have normally redirected to our google.com, but if I check the backend, so you can check this. Okay, okay, we got a hit printing the output. So just you can just see, okay, by this is the username and this is the password. So this is how a phishing would be work, like phishing page would work on this. ठीक है, कौन सा, वो गायब हो गया, that has been redirected to this google.com. So if a victim is like, victim wouldn't know कि भाई what just happened here. रिफ्रेश हो गया, यस। हाँ, गूगल खुल गया। पॉपअप के लिए आपको, हम्म, उसके लिए यू हैव टू क्रिएट अ कस्टम पेज, लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट के, जैसे हाँ, आपका कहना ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गूगल का फिशिंग पेज हो, ठीक है, और जैसे ही बंदा साइन इन पे क्लिक करे तो क्रेडेंशियल तो मेरे पास भेज दे और उसके बाद एक पॉपअप आ जाए कि यू हैव बीन हैक्ड। तो यू कैन क्रिएट योर ओन, हाँ, यू कैन क्रिएट योर ओन फिशिंग पेज एंड यू कैन जस्ट यूज जो इम्पोर्ट बटन है ना इसके अंदर, कस्टम इम्पोर्ट, यू कैन इम्पोर्ट योर फाइल्स हियर एंड फाइल्स इम्पोर्ट करने के बाद यू कैन डू थिंग्स नॉर्मली। हाँ, एच टी एम एल में बनाना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में ऐड करना पड़ेगा ताकि लॉजिकल रहे, फॉर्म्स वहां पे रहेंगे, एंड देन यू कैन डू वट एवर यू फील लाइक। आप क्लिक करवाने पे आप जो भी बुलवाना चाहते हो बुलवा सकते हो, यू कैन किसी भी हद तक ले जा सकते हो इसको। हाँ, अब लेट अस जस्ट डू वन मोर थिंग, दैट इज, कहीं पे वट एवर यू फील लाइक, जैसा तुम चाहते हो यू कैन डू। और इवन यू कैन यूज एनजी रॉक एंड ऑल, तो उससे वो आपका ऑनलाइन होस्ट भी हो जाएगा। क्यों नहीं चल रहा था? हाँ एपीआई, हाँ एपीआई सेट करनी पड़ती है आपको। एपीआई की जो होती है ना, एपीआई के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे आपको एक की मिल जाएगी एंड यू कैन यूज दैट की टू मेक इट। हाँ। हम्म, हम्म, ठीक, ओके। अब देखो, बहुत सारे अटैक्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अटैक्स, फॉर एग्जांपल वी टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्राउजर ऑटो कंप्लीट अब्यूज, ठीक है। ब्राउजर ऑटो कंप्लीट अब्यूज का पता है किसी को? नहीं पता, ओके। सो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, फॉर एग्जांपल एक फॉर्म है, देयर इज अ फॉर्म mentioned with username and मान लो फॉर एग्जांपल देयर आर सम डिटेल्स, योर नेम एंड योर सिटी, ठीक है। तो व्हाट यू डिड, जब भी आपने देखा होगा तो ब्राउजर ऑटो फिल करता है, कभी कभी आता है ना ऑप्शन टू ऑटो फिल द डिटेल्स, व्हेन यू जस्ट क्लिक ऑन देम एंड डिटेल्स विल बी ऑटो फिल्ड, राइट। होता है ना, मतलब आपको कहीं एड्रेस वगैरह भरना है तो गूगल का ऑप्शन आ जाता है कि यूज सेव्ड डिटेल्स, सेव्ड डिटेल्स, सेव्ड डिटेल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मान लो आपका एड्रेस मांगा तो आपने एड्रेस पे क्लिक कर दिया तो वो अपने आप भर दिया उसने ना, होता है ऐसा। हाँ,
हम्म सेम थिंग। ठीक है। तो द सिंपल थिंग यहाँ पे इज के होता क्या है, मान लो आपको तो टू टैब्स आर विजिबल टू यू, बट नीचे मोर टैब्स आर मेंशन्ड, लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी। होता है ना, लोग सेव करके रखते हैं ना अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर्स, ताकि बार बार यूज करने पड़े तो। हाँ हाँ, क्रेडिट नहीं 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 नहीं, होता है ना ब्राउजर के अंदर, मान लो आपने कहीं पे पेमेंट की तो ऑप्शन आता है ना टू सेव योर नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ताकि आप बाद में भी यूज कर सको। हाँ 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 हाँ, काइंड ऑफ अभी अपन ब्राउजर की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल, पहले मैं हिंदी में समझाता हूँ कि एक वेबसाइट है, उस पे आपको एक लिंक मिला, व्हाट यू डिड कि एक लिंक मिला, लिंक खोला आपने, खोलने के बाद वहाँ पे सिर्फ दो चीजें विजिबल थी, सिर्फ ऊपर के कॉलम्स विजिबल थे, एक पे लिखा हुआ था नाम, एक पे लिखा हुआ था सिटी। तो व्हाट यू डिड कि यू सिंपली नॉर्मली आपने नाम और सिटी लिख दिया एंड डन। ठीक है, आपने ऑटो फिल पे क्लिक किया, ऑटो फिल करते ही वो दो डिटेल भर गई एंड आपने सबमिट कर दिया। बट सीएसएस होता है, सीएसएस को मतलब जो ओपेसिटी होती है, ओपेसिटी को हैकर ने क्या किया, जीरो करके और नीचे भी कॉलम्स ऐड कर रखे थे। नीचे जो कॉलम्स ऐड कर रखे थे उनके अंदर क्या लिखा हुआ था, क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी, सब कुछ मेंशन था। तो आपने ऑटो फिल किया, ऑटो फिल करते ही जितने भी कॉलम्स होते हैं सबके सब भर जाते हैं। ये आपको दिखे नहीं थे, बट ये भर गए और आपने सबमिट कर दिया, तो जितनी भी डिटेल्स थी ये अटैकर के पास चली गई। नहीं, credential harvesting, you can just harvest the details, credentials, or you can harvest the credit card, debit card, or some sensitive data which is already saved in the browser। मतलब ये नीचे वाला कॉलम is not visible to you, that's it। And then we have, let us just, and you can use chat gpt, or you can, if you guys are like good in like html css, then you can make your own phishing page, like this kind of phishing page and all. This can also be done, this is called browser autocomplete abuse। ये issue, ये क्या भेजा है आपने? और डायरेक्ट लिंक नॉट जनरेटेड, और check your internet connection। You can do one thing ना, रुको, do one thing, uh, Isha, do one thing, just search Cloud Shell and use this. This is a free RDP kind of thing. So you can just use this and यहाँ पे अपने login कर लो and open the terminal and do the like same git clone यहाँ पे and it will work. Just click on this link and just यहाँ पे you can see a terminal is there. Just authorize that यहाँ पे, just turn on the terminal and done. Yeah, I'll just close my terminal machine को बंद कैसे रखते हैं? Hmm, okay, let me just remove this. Yeah, we are done with this. And we have one more thing। ईशा, कितने अकाउंट से आओगे आप?
Okay. Now, there are some more things you can try on your own. For example, this Metasploit browser exploitation method, webjacking, multi-attack web methods, HT attack methods, and a lot of things are mentioned here. So what you have to do is, and everything is mentioned here. Okay, how it is used, like what is the actual work of that, and sab kuch is mentioned here. Every single thing. You can just check this out. What is tab napping method? Will wait for a user to move to a different tab, then refresh the page to something different and all ऐसे करके बहुत सारे social engineering techniques are mentioned here. So you can try on your own everything. Let me just exit this for a while. Thank you for shopping with so okay. Now you can also use USB HID attacks. That is rubber ducky के बारे में सुना है? Rubber ducky नहीं सुना? So rubber ducky or a bad USB. You can even order them or you can create your own rubber duckies. Rubber ducky, how to create my own rubber ducky. So you can just read this and okay, what is that? Okay, this is in course on Udemy. You don't have to buy that, but ये free में पढ़ा होगा leak होगा कहीं पे. Make your own rubber ducky. You can just go with the articles. Okay, this is in complete structure. First, let us understand कि what is a rubber ducky. ठीक है. तो rubber ducky is kind of a pen drive kind of a thing. Like एक pen drive है. Looks like this. Uh, this. ये तो ओरिजिनल वाला है जो $100 समथिंग का कुछ कहा था. तो यू कैन जस्ट व्हाट हैपेंस हियर. HID के बारे में आप लोग जानते हो? HID. HID. ओके. तो HID क्या है? HID आर ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस. मतलब कि योर कीबोर्ड्स, योर माउस, योर गेम कंट्रोलर्स, टच स्क्रीन्स एंड अदर इनपुट डिवाइसेस. अब होता क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू जस्ट इंसर्ट द कीबोर्ड, तो आपसे परमिशन मांगा जाता है क्या किसी चीज करने का, कि आप एक्सेप्ट करोगे तो की. हाँ, ऑटोमेटिक हो जाता है, अपने आप चालू हो जाता है सब कुछ. तो सेम थिंग गोज विद द रबर डकी, के रबर डकी को HID बनाया गया है. रबर डकी हैज बीन इंटेंशनली मेड एज एन HID डिवाइस सो दैट कंप्यूटर शुड नॉट डिटेक्ट दैट. एंड any script, like for example any shell script, for example any uh, like commands जो भी आपने दिए हैं to get the shell to hack the PC, to run anything. So without the other person getting about, like without getting or caught, you can just run anything on their system. They'll just, it is uh 2 3 और like just थोड़ा सा काम है 10 से 15 सेकंड का, और उसमें पूरा काम हो जाता है आपका विदाउट गेटिंग कॉट. आप पेन ड्राइव लगाते हो. हाँ, सब सब. शेल शेल मिल जाएगा आपको. you'll get a shell and then you can exploit that PC जो भी आपने हैक किया है. पर अगले को नहीं पता चल रहा उस टाइम पे. क्यों नहीं पता चल रहा? बिकॉज इट इज एन HID डिवाइस. HID मतलब होता है आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया. तो इनको लगाने पे क्या होता है, कोई पॉपअप नहीं आता है, पर आपका काम जरूर हो जाएगा. आप लगाओगे एंड स्क्रिप्ट अपने आप, जो भी स्क्रिप्ट यू हैव installed in that rubber ducky, so it will automatically be automatically it will work and will get a shell or whatever the script you have installed. Sorry, मिलने का बताता हूँ. ईशा, आप क्या बोल रहे हो? ओके. देखो, if you guys have a lot of money तो you can just order it from Hack5. और $100 मतलब अराउंड 8,000 समथिंग का आता है ये. तो यहाँ से मंगा सकते हो. एल्स अगर इफ यू वांट के, देखो, इफ यू गाइज
No, okay, if you have ever watched this Mr. Robot, this is a web series. So it is like बहुत अच्छी वेब सीरीज है. You like must watch that. तो उसमें भी देखो ये यूज की गई है. You can just read that. There's a rubber ducky, plug it in and just wait for the 15 seconds and सब कुछ हो सकता है. यहाँ पे इन्हें पासवर्ड चुराया है. मिमिकास से पासवर्ड चुराया. We'll be learning that further, but यहाँ पे भी इन्हें पासवर्ड चुराया है. तो you can do everything you want. ठीक है. बैंड है. तो आपका कोई, हाँ, ये साइट ट्रस्टेड है. और बाकी इफ़ यू वांट क्या, हाँ, इफ़ यू वांट तो आप है ना, आपके कोई घर वाले भी बाहर रहते हैं ना, लाइक घर वाले या कोई फैमिली रिलेटिव्स आर अब्रॉड, तो यू कैन आस्क देम टू गेट यू वन. हाँ, वहाँ इट विल बी चीपर वहाँ पे. हाँ, लगाना है, इसके अंदर स्क्रिप्ट अपलोड करना है, जो भी स्क्रिप्ट है, एंड बूम, ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट रन हो जाएगा. नहीं, कॉपी वॉपी कुछ नहीं करेगी. देखो, इसका अलग अलग स्क्रिप्ट है. टोटली डिपेंड्स ऑन यू. आप क्या चाह रहे हो. आप चाह रहे हो कि भाई मेरे को अ, मेरे को है ना उसके आईडी पासवर्ड चाहिए. एक सैम फॉर सिस्टम फाइल होती है विंडोज के अंदर. तो उससे क्या होता है, आपके जो आईडी पासवर्ड होते हैं ना विंडोज में, जो आप आईडी पासवर्ड, आईडी क्या पासवर्ड यूज करते हो विंडोज में, तो वो सैम और सिस्टम फाइल में सेव होता है. तो आप उन फाइल को निकाल के और उसको क्रैक कर सकते हो. तो अब इसमें आपने क्या किया, आपने रबर डकी डाली, आपने स्क्रिप्ट ऐसी बनाई कि भाई मेरे को सैम और वो जो सिस्टम फाइल है वो मेरे यहाँ पे कॉपी हो जाए. तो आपने जैसे पेन ड्राइव डाली, तो जितने भी पासवर्ड्स है, मान लो आप चाहते हो कि ब्राउज़र के पासवर्ड भी कॉपी हो जाए, सब कॉपी हो जाए, तो वो आप कॉपी करवा लो. वरना आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को तो शेल चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसका रिमोट एक्सेस मेरे को मिल जाए पीसी का. तो आपने वैसे ही स्क्रिप्ट बनाई, वैसे ही स्क्रिप्ट बना के आपने डाल दिया, तो आपको वो मिल गया. तो इट्स टोटली लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू वांट. हाँ, स्क्रिप्ट आपको बनानी पड़ेगी. वैसे पहले से स्क्रिप्ट बनी हुई मिलती है गिटहब वगैरह पे, तो वहां से यू कैन यूज देम. या, और इसको मंगाने की जरूरत नहीं है वैसे. यू कैन क्रिएट योर ओन. देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स. तो यू कैन जस्ट लुक इनटू देम, एंड नॉर्मल छोटी छोटी डिवाइसेस से यू कैन जस्ट 300 रुपये 400 रुपये में ये सेम चीज बना सकते हो. ऐसे मैंने बहुत पहले ट्राई की थी. ईएसपी से ट्राई की थी. हाँ, नहीं बन गई थी ना. ईएसपी करके आता है, ईएसपी मनी कंट्रोलर आता है, उनसे बना सकते हो. मेरे पास एक आर्टिकल भी पड़ा होगा, मैं भेज दूंगा आप लोगों को. यूल जस्ट लुक इनटू दैट एंड ओके. यहाँ पे देखो, यहाँ देयर आर सम पेलोड्स रबर डकी के स्क्रिप्ट्स यहाँ पे है. तो डायरेक्टली फ्रॉम द क्रिएटर्स. ओके, ये तो पेड है आई गेस. तो ऐसे करके स्क्रिप्ट्स आपको ऑनलाइन. हम्म. हाँ. हम्म. नहीं, ये नेटफ्लिक्स पे और प्राइम पे सब जगह से हट गई है. अभी आपको पायरेट की करनी पड़ेगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी. हिंदी इंग्लिश सब में. प्राइम वीडियो पे भी रेंट करनी पड़ेगी. पहले थी, उन लोगों ने हटा दी. चलो लेट अस मूव फर्दर. इसका लिए ड्रॉ की लॉगर हो गया. हम्म. You can do one more thing के you can create your own keylogger. अब I hope you guys are aware के what are keyloggers. What is a keylogger? नहीं नहीं. Keylogger या keystroke logger is a keyboard capturing. It is a form of malware or a hardware that keeps a track and records your keystroke as you type. मान लो आप कुछ भी टाइप कर रहे हो ना, कुछ भी whatever, तो उसका हर चीज कैप्चर होती जाएगी. नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी मर्जी है. अलग अलग चीजें हैं. कोई अपने टेक्स्ट फाइल में लेते हैं, कोई C2 पे लेते हैं, अलग अलग जगह पे लेते हैं. और ये देयर आर टू टाइप ऑफ की लॉगर्स, सॉफ्टवेयर की लॉगर्स एंड हार्डवेयर की लॉगर. लाइक हार्डवेयर की लॉगर्स.
So software में there are a lot of softwares like paid and free software. So you can just Google them and find them. And hardware के अंदर you have some tools like not tools, I mean hardwares like these like जो कीबोर्ड के आगे लग जाते हैं and they'll just store that and you'll just get your, for example, hardware key loggers. देखो ये रहे ऐसे कुछ दिखता है तो दे विल बी जस्ट कनेक्टेड विद द कीबोर्ड एंड आपने मान लो फॉर एग्जांपल आप कहीं पे इनको लगा के आ गए कोई कीबोर्ड कंप्यूटर पड़े हैं तो आपने कोई सरकारी कंप्यूटर का कोई पड़ा है तो आपने पीछे लगा दिया तो जितने भी कीबोर्ड्स हैं उनके आईडी पासवर्ड है लॉगिन के सब कुछ विल गेट। कुछ वाईफाई वाले आते हैं तो ऑनलाइन दिखा देंगे कुछ सिर्फ एसडी कार्ड वाले आते हैं तो दे विल जस्ट सेव योर लाइक अपने अंदर ही सेव करके रख लेंगे बाद में आप देख सकते हो। और सॉरी कहाँ पे? हाँ हाँ ले सकते हो ना बताया ना दो तरीके के होते हैं एक हार्डवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर तुम्हें गिटहब पे मिल जाएगा आपको सिस्टम के अंदर डालना पड़ेगा बस। हाँ देखो हार्डवेयर है तो हार्डवेयर तो यू कैन जस्ट डिटेक्ट इट बाय चेकिंग द जो भी आपका मान लो फॉर एग्जांपल हार्डवेयर तो दिख जाएगा ना कि भाई ये नया क्या डिवाइस लग गया है यहाँ पे। ठीक है। सॉफ्टवेयर का डिटेक्शन इज लाइक कि भाई फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ इंजेक्ट किया है मान लो कोई मालवेयर डाल दिया आपके सिस्टम में या कुछ डाला है। ठीक है। मान लो सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं तो अगर आप यू आर अवेयर ऑफ दी सॉफ्टवेयर के ओके हाँ हाँ ऐसे करके जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो सब कर सकते हो। बाकी मान लो एक्सटेंशंस में भी लगते हैं अपने यहाँ पे ना एक्सटेंशन में लग गया तो आपने एक्सटेंशन चेक कर लिया आपको लाइक सेटिंग्स चेक किया आपने और आपके जो जितने भी इंस्टॉल्ड क्या बोलते हैं इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होता है ना वो विंडोज में आता है ना कंट्रोल पैनल के अंदर जाके प्रोग्राम्स तो आपने उनको इन्वेस्टिगेट किया तो वो सारी चीजें करके आप चेकआउट मार सकते हो कि ओके ऐसे ऐसे करके ये कोई चीज हो सकती है या फिर मतलब देखो मोस्टली क्या होता है अ, जो अपनी स्टार्टअप लिस्ट होती है मेरे पास विंडोज है क्या है तो सही उसको खोल कर एक सेकेंड एक सेकेंड विंडोज फॉर एग्जांपल टू चेक या टू आइडेंटिफाई द की लॉगर्स व्हाट यू कैन डू इज जस्ट एक सेकेंड गेटिंग विंडोज रेडी। नाउ देखो यहाँ पे इफ यू जस्ट क्लिक हियर एंड इफ यू टाइप control panel now install a program so here you can find ke what programs are installed here and if you found something like shady या कुछ keylogger types तो you can delete it or for example you can even check the startup startup apps तो जो स्टार्टअप ऐप्स है here you can see कि जब मेरा लैपटॉप स्टार्ट होता है तो क्या क्या चीजें स्टार्ट होती है तो यू कैन जस्ट टर्न देन ऑन एंड लाइक ऑन करके ऑफ करके तो होता क्या है कीलॉगर कोई बंदा अगर इंस्टॉल कर रहा है तो वो चाहेगा ना कि भाई लैपटॉप स्टार्ट हो तो मेरा कीलॉगर अपने आप स्टार्ट हो जाए बार बार उसका लैपटॉप थोड़ी हाथ में लेके मैं करूंगा। तो जस्ट यहाँ स्टार्टअप ऐप से आप हटा सकते हो तो यू विल गेट टू नो ओके ये कोई प्रोग्राम है और ये इंस्टॉल हुआ है तो इसको आप कर सकते हो। बाकी आपके जो होता है ये अपना विंडोज डिफेंडर होता है और दे कैन जस्ट कैच दैट
बाकी अगर छुपा ही रखा है, एम्बेड कर रखा है तो इट इज़ बिट मुश्किल। बाकी आपको फिर वायरशार्क चेक करना पड़ेगा कि भाई वायरशार्क पे यू कैन चेक द ट्रैफिक के ओके इस आईपी से लाइक मेरे आईपी से दूसरे आईपी पे कुछ भेजा जा रहा है, कुछ पैकेट्स भेजे जा रहे हैं, तो यू कैन चेक विद दैट टू। So there like there lot of methods for that. And you were come again? स्पेलिंग बोलना बी मतलब बी। हम्म। जो कीलो अगर अपन पढ़ रहे हैं और एक आपने बोला बी डबल वाला बी लॉग बी लॉगर इस काइंड ऑफ अपना वो पता है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई ईएक्सी फाइल है होती है ना ईएक्सी एक्सटेंशन लाइक जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है उनके अंदर की लॉगर को आप एम्बेड कर देते हो तो वो बी लॉगर बोलते हैं उसको। ऐसे- देखो वो आप खुद करना कि लॉगर गेट गेट सब कुछ करके क्या है नहीं पाइथन रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ओके ये तो रैट है की लॉगर यू कैन इवन की कोड योर ओन थोड़ा सा अगर पाइथन वाइथन आता है तो यू कैन कोड योर ओन की लॉगर यहाँ पे भी पाइथन में यूट्यूब वीडियो देख के या कैसे भी। देखो अब यहाँ पे एक की लॉगर है सिंपल की लॉगर फॉर विंडोज एंड लिनक्स एंड मैक ओके। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो देयर आर सम सिंपल थिंग्स तो कि लेट मी जस्ट हेल्प यू इंस्टॉलिंग cd tools clear git clone done ls cd keylogger. Now let us just check the installation. No search directly found. Okay, ls okay cd linux ls. Hmm. Okay, installed. Now okay, Python. Okay, now running by no keylogger. Okay, no hop करके कुछ है ये keylogger.py ls क्या है no not ignoring input and appending to out. Okay, the keylogger is now running. It will log a stuff to a file. Stop it by typing the command fg and then hitting control C. Okay, now what happened is कि ये जो keylogger है that is a simple keylogger. What it did कि अब if I type something यहाँ पे अब ये एक process number is mentioned कि okay this keylogger has been work like started here. Okay, two processes were made. तो यहाँ पे दो प्रोसेस ने बना दिए एक यहाँ पे भी चल रहा है एक यहाँ पे चल रहा है और एक इसका जो स्ट्रोक है मतलब जितनी भी चीजें हैं इट विल बी सेव इनटू अ फाइल ठीक है। नाउ टू स्टॉप दैट आई गेस आई हैव टू हिट एफजी एंड देन देखो की लॉगर पाइथन 3 की लॉगर py आई जस्ट हैव टू कंट्रोल सी एंड शट डाउन डन। नाउ लेट अस चेक के फाइल्स कहाँ पे सेव हुई है। ओके यहाँ पे देखो ये लॉग एक लॉग बना है।
मैंने देखो ये रहा, एफ एफ जी करके कुछ लिखा है। देन रुको, यहाँ नहीं लिखेगा। और स्टार्ट चेन, यहाँ पे बेसिक जो भी अपन टाइप करेंगे, फिर एवरीथिंग विल बी सेव्ड हियर। ये पे आई गेस ये डिफरेंट फॉर्मेट आ रहा है, ये डिटेक्ट नहीं कर पाया होगा, इसलिए ये लाइक अनरीडेबल समथिंग कुछ आ रहा है। बाकी कुछ चीजें जो अपन ने टाइप की थी वो यहाँ पे मेंशन दिखा रही है, जो भी आप टाइप करोगे यहाँ पे सेव होता है। ये बेसिक सिंपल की लॉगर का एक वो है, मेथड। दैट से फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। नाउ इफ आई हिट बिल गेट्स, अब ट्राई करते हैं कुछ अगर आता है तो। एफ जी, कंट्रोल सी, एलिस, एंड लॉग है 1409। तो लेट मी ट्राई नैनो एंड okay, there you go. Bill Gates, FG, and done. Okay, so this is how a keylogger works. So normally you can install that and check the files. And to make it creative, you can also find some keyloggers, though like that will send the data or the file to the जो अपना अटैकर है उसके कंप्यूटर पे। इफ यू हैव इंस्टॉल दैट एंड टारगेट के सिस्टम पे, देन जो भी टारगेट टाइप करेगा यू कैन गेट इट टू योर C2, जो भी कमांड कंट्रोल सेंटर है वहां पे आप मंगवा सकते हो, अपने खुद के सिस्टम पे मंगवा सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू के व्हाट डू यू वांट। ओके, नाउ लेट अस जस्ट क्विकली move to the Wi-Fi hacking ka part. And so there are a lot of ways to like steal the credentials. So मतलब बहुत सारे हैं, तो you can just figure some of them on your own. Okay, now let us just quickly, no, like exit. Hmm, done with this. Now let us just open the module. So, Wi-Fi hacking and Wi-Fi security, cracking WEP, WP, WP2, PMKID attack, Ableton attack, rogue access point, and the authentication attacks. Okay, let us complete this. Guys, कोई प्रॉब्लम है तुमको लगे अगर अपन क्लास एक्सटेंड करें तो? मैं सोच रहा था वीकेंड है तो तुम भी इंजॉय करो, मैं भी कर लेता हूँ आगे शाम को। अभी कर देते हैं शाम वाली। टॉपिक तो पढ़ा नहीं। बताओ ईशा। ठीक है, आप तो चाहिए रहते ना कब से, और लंबी हो जाए। ओके, हाँ ठीक है। तो लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, अभी फिर से नई स्टार्ट करते हैं।